Oavs. Good afternoon everyone. Welcome to BIREN'S Academy. आज आम डिस्कसन करवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आम टोटल डिटेल्स जानिबा nomenclature of the organic compounds, all the chemical reactions, functional groups, isomerism, different things we will discuss today. Okay, today topic first we will discuss what? First today we will discuss organic chemistry. Okay, how can say what in by organic chemistry? What in by organic chemistry? Organic chemistry means what? It is the branch of chemistry which deals with the study of the what? Hydrocarbons. Organic chemistry means what? It is the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons. Hydrocarbon means what? What in by hydrocarbons? How can say what in by hydrocarbons? Hydrocarbons means hydrocarbon means the bond forms between hydrogen and carbon atom. Clear all of you? In different configuration. Clear all of you? In organic chemistry means what? It is the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons. What in by hydrocarbons? Hydrocarbon means the bond forms between the what? Carbon and hydrogen. Clear? In these hydrocarbons and what are different configuration. For example, we take methane, CH4. Methane is formed the bond between carbon and hydrogen. In case of benzene, C6H6, it is a what? Aromatic compounds like this. The bond formed between what? Carbon and hydrogen. That means organic chemistry which deals with the branch of chemistry with the study of hydrocarbons in what? Different configuration. This is called organic chemistry. Clear all of you? Clear all of you? Okay. In organic chemistry, that means the formation of different compounds in different configuration like cyclic, alicyclic, aromatic and aliphatic. These are the different forms, bond forms between what? Bond forms between what? Carbon and hydrogen atom. Clear? So this is called what? Organic chemistry. In organic chemistry, first we will discuss what? Functional group. What? Functional group. What in by functional group? How can say what in by functional group? What functional group means? The group of atoms joined in a specific manner which determines the chemical properties of the organic compounds. In organic compounds, they are having different kind of organic compounds. In different organic compounds, the group of atoms they join together, then they determine the what? Chemical properties of the organic compound. This is called what? Functional group. This is called what? Functional group. Functional group, it is of what? Two types. One is what? Terminal. Another is what? Non-terminal. Another is what? Non-terminal. Functional group types what? One is terminal, another is what?
non-terminal. Terminal means what? The functional group which present at the end of the carbon chain. This is called terminal functional group. Terminal functional group means what? The functional group which is present in the what? End of the carbon chain. Consider we take example CH3, CH2, OH. In this case alcohol. This is the functional group of alcohol which is present at the end of the what? Carbon chain. That means this is the terminal. Non-terminal means what in by non-terminal? Non-terminal means what? Now when the functional group present in between the carbon chain is known as non-terminal. For example, we take CH3, CH, double bond CH, and is what? CH3. In this case, this functional group of what? Alkene. This is the functional group of what? Alkene. That means this alkene which is present in between the carbon atoms. When the functional group is present in between the carbon atom, that means this is called what? Non-terminal. When functional group is present at the end of the carbon atoms or carbon chain, is known as what? This is called what? Terminal functional group. Clear everyone? Clear? For example, we take another example. Terminal, non-terminal, we take another example. CH3, CH2, CH, double bond CH2. In this case, double bond present is the what? End of the what? Carbon chain. That means this is terminal. For example, CH3, CH, 2, CH, double bond CH. Next is what? CH3. In this case, the double bond is present in between the carbon chain. That means this is the what? Non-terminal. This is what? Non-terminal. This one is the what? Terminal. Clear everyone? Clear. Like functional group aldehyde. The functional group is what? Bond CHO. Ketone. The functional group is what? Single bond C, double bond O, single bond. Another is what? Alcohol. The functional group is what? Bond OH. Another is what? Carboxylic acid. The functional group is what? Bond COOH. Clear? So they are having many kinds of functional group which is present. Okay. When the functional group, clear all of you, that means functional group. What do you mean by functional group? Functional group means atoms or group of atoms joined together in a specific manner which determine the properties of what? Organic compounds. When the functional group is present at the end of the carbon chain, that means this is terminal. When the functional group is present in between the carbon chain, this is called what? Non-terminal. Clear? Chalo next. In this case, some functional group एटा directly standard 11th chemistry book रे मिली जिवो समस्ते जानिया पाइबो. एटी देखाइ देखो alkane रो functional group कोन? Single bond. This is what? ANE. The general formula is what? CN H2N plus 2. In case of alkene double bond, this is what? ENE. The general formula is what? CN H2N. Another is what? Triple bond alkyne. The general formula is what? CN H2N minus 2. So देखो ये देखा है लिया है alkene बुझेला alkyne arenes, halides, alcohols, aldehydes, ketones, nitriles, ethers, carboxylic acids, COH, ethers ROR, nitriles C triple bond N, ketones single bond C double bond O, aldehyde CHO, alcohol OH, halides or halogen groups X is what? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. The different kind of functional group is present. Okay, clear everyone? Next we'll discuss homologous series. Next we'll discuss what? Homologous series. What in by homologous series? How can say what in by homologous series?
Homologous series means what? When the atoms or group of atoms which having, or the compounds which having same functional group and similar chemical properties, and they are differ by what? CH2 group. The compounds having same functional group and similar chemical properties is known as, and the compounds differ by which group? CH2 group. Clear? This is called homologous series. Homologous series means what? It is defined having the same functional group and similar chemical properties, and the compounds are differed by what? Which group? CH2 group. Clear? Consider we take example. In this example we write consider we take alcohol. Homologous series of what? Alcohol. The functional group is what? Bond OH. Clear? Alcohol, the functional group is what? Bond OH. In this case, the general formula of homologous series what? CnH2n plus 1, because we take the functional group is alcohol, that means bond forms with what? Alcohol. This is the general formula of homologous series of what? Alcohol. We can write CH3 OH, C2 H5 OH, C3 H7 OH, C4 H9 OH. We value put n is equal to 1, 2, 3 and 4. Clear? Now the compounds methanol, ethanol, what? Propanol, butanol, they are the different kind of what? Alcohols, but they having similar chemical properties and the same functional group, and these compounds or these group of compounds, they are differ by which group? CH2 group. Differ by which group? CH2 group. That means these are called what? Homologous. These are called what? Homologous series or homologous compound means the compounds which having same functional group, similar chemical properties, and the successive members are differ by CH2 group. Clear everyone? Clear? Consider in case of aldehyde, the functional group, the general formula is what? CN we can write aldehyde, the general formula is what? CnH2nO. In case of ketone, the general formula is what? CnH2nO also. Clear? And in case of alcohol, the general formula is what? CnH2n plus 1 OH. Clear? समझते क्लियर? जदि आल्डिहाइड थिबो ताले आल्डिहाइड ग्रुप लागिवो, CHO ग्रुप लागिवो. जदि कोन थिबो? कीटोन थिबो ताले सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप लागिवो. जदि अल्कोहल थिबो ताले OH ग्रुप लागिवो. बुझियला? होमोलोगस सीरीज रे फंक्शनल ग्रुप कोन होबा दरकार? सेम होबा दरकार, एंड द सक्सेसिव मेंबर जो कंपाउंड्स बाहरिबो तांको भितरे डिफर कोन होबा दरकार? CH2 होबा दरकार. क्लियर? नेक्स्ट विल डिस्कस व्हाट? Now fast organic compounds prepared in laboratory. Fast organic compounds prepared in laboratory is what? Now urea. Urea is the fast organic compound which is prepared in laboratory by what? This is called Euler synthesis. Which synthesis? Euler synthesis. Friedrich Euler is the what? German chemist who synthesized fast organic compounds urea in what? Laboratory. Okay. How he synthesized? Now from what? Ammonium cyanide. This is called which salt? Inorganic salt. This is called which salt? Inorganic salt. This from this inorganic salt on heating get what? Urea. Clear? This is the fast organic compounds.
organic compounds. Clear समझते? Okay, next we'll discuss what IPSC system of nomenclature. This is the very important topic. IPSC nomenclature of the what? All the organic compounds. First we have to know what in by IPSC nomenclature. IPSC means what in by IPSC? What in by IPSC? IPSC means what? What in by IPSC? IPSC means International Union of Pure and Applied Chemistry. Clear? IPSC system means International Union of Pure and Applied Chemistry. This international system or IPSC system nomenclature define the name of and what organic compounds. Organic compounds name को define करिया पे हमें केमती कौन यूज करू ना IPSC system. से IPSC system हिसाब रे हमें we can define the all the name of and what organic compounds. Clear? So in IPSC system, first these are the first three most important things. One is what word root, another is what suffix, another is what prefix. One is what word root, another is what suffix, another is what prefix. Word root means what in by word roots? Word root means in an principal carbon chain, in an principal carbon chain, or this is called what parent chain. Parent chain. How much number of carbon atoms are present? Clear? This is called what word root. Word root means word root is define how much number of carbon atoms present in a principal carbon chain or principal carbon atom. Clear? In this case, word root represent the number of carbon atoms present in the what principal chain, which is the what longest possible chain of the what carbon atoms. So simply we can write the word root of the different carbons. First, if C1, if there is having what C1, that means the word is this is called what meth. C2, this is called what eth. C3, this is called what prop. C4, this is called what bute. C5, 5 number of carbon, then this is called what pent. C6, 6 number of carbon, this is called what hex. C7, this is called what hept. C8, this is called what oct. C9, this is called what non. C10, this is called what deck. C11, on deck. C12, dodeck. Okay. C13, trideck. C14, what tetradeck. C15, this is called what pentadeck. Clear? Till 15 पर्यंत समस्त मन रखिथिबो. Word root, that means this word root is define the number of carbon atoms present in the what principal carbon chain. Clear? समस्त clear? Now we'll discuss what suffix. Next we'll discuss what suffix. What in by suffix? Suffix are the two types of there. One is what primary suffix, another is what secondary suffix. What in by suffix? Suffix is added before the word immediately or after the what word root. Word root रो before रू कौन ऐड करा जाए ताको suffix को ऐड करा जाए. बुझी हला? जदि consider we take alkane. जदि alkane थिबो ताले तार suffix कौन होबो ane. This is the word primary suffix. बुझी हला? जदि नेबी मु alkene, then this is what ene. Another is what alkyne, then the suffix will be what yne. So these are the suffix. These are the which type of suffix? Na primary suffix. Which suffix? Primary suffix. These are called what primary suffix. Clear समझते? Consider in this case we write what primary suffix. Okay, primary suffix is used to indicate the degree of
saturation and unsaturation. What in by degree of saturation? What in by degree of saturation? Saturation means the carbon compounds, the bond between carbon compounds, the bond between carbon compounds is what? Single bond. This is which carbon? This is also called what? Saturated carbon. Saturated which atom? Carbon atom. बुझिएला. If the bond between carbon carbon double bond and the bond between carbon carbon is triple bond, these are called what? Unsaturated. Are called what? Unsaturated. And these also called what? Unsaturation. We can say what? Unsaturation. Clear? That means primary suffix is used to determine the about the what? Saturation and unsaturation of an carbon compound. Saturation means if the bond forms between carbon carbon is single bond, this is saturated carbon. If the bonds form between carbon carbon is what? Double bond, this is called what? Unsaturation carbon. Clear समझते? Clear? Okay. Next we will discuss secondary suffix. Next is what? Secondary suffix. Secondary suffix is used to represent the functional group. Which kind of functional group is present in a carbon chain? That determines the what? Secondary suffix. In this secondary suffix, in this word secondary suffix, the group is what? CS3. Present group is what? CS3, CS2, OH. That means which group is present? Functional group of what? Alcohol. Functional group of alcohol. In functional group of alcohol, this alcohol, the functional group is secondary suffix is what? OL. Secondary suffix is what? OL. If in case of aldehyde is present, aldehyde, the functional group is what? CHO. Then the secondary suffix is what? Secondary suffix is what? AL. Secondary suffix is what? AL. बुझिएला. जदि कार्बोक्सिलिक एसिड थांता ताले ओइक एसिड, जदि अमीन थांता ताले कोन हेतांता? अमीन हेतांता. जदि नाइट्राइल थांता नाइट्राइल हेतांता. बुझिएला. तो these are the number of what? Secondary suffix is used in the what? Nomenclature of an what? Organic compounds. Clear? Clear समझते? Next we'll discuss what? Prefix. What in by prefix? How can say what in by prefix? Prefix is the part of a what? IPSC name which appears the before the word root. Word root before जो यूज करे छे ताको कोन कहै छै ना? Prefix कहै छै. कोन कहै छै? Prefix कहै छै. The prefix is used to indicate the side chains and substituents. In this case, we take the example is what? CS3, CH, CH, CS3. In this case, this CS3 is called what? Group. This is called what? Group. And this chain, this is called what? Parent chain. Parent chain. This is called what? Parent chain. And this OH also what? Another group. Clear? And in this case, first, which one is present? Now methyl group is present. This methyl group is called the what? Prefix. And how much number of carbon is present in this chain? These are called what? Word roots. And another is what? Suffix. How much number of suffix? Suffix is present. All are the what? Single bond. There is no double bond. There is no triple bond. That means there is saturation, or this carbon is what? Saturated carbon atom. There having no unsaturation. That means this is called what? 1 degree suffix. This is what? ANE. Another is what? Secondary suffix. Secondary suffix means what? Functional group is present. Which functional group is present? Alcohol. This alcohol is the what? Secondary suffix. So that means we can write the name of this compound is what? First we have to write what? First we have to write is what? Suffix, secondary suffix, then word root, then primary suffix, then what? Secondary suffix. In this case, first we write which number is closer to this carbon atom. In this side, methyl group is closer to this carbon atom. 1, 2, 3, 4. Naming according to naming. In this side, 1, 2, 3, 4. That means in this case, one is methyl group is present, another is what? Alcohol functional group present. But this CS3 group is closer to which carbon atom? This carbon atom. And this OH group is closer to which carbon atom? This carbon atom. But according to the priority order, we have to take the first word functional group of alcohol, then is what? Methyl. Clear? That means we have to naming from the word this right side. That means 1,
2, 3. Which group is present? Methyl group. 3 position methyl group is present. That means 3 methyl. 3 methyl. How much number of carbon? Total number of carbon is how much? 4. That means but. All are the bond between carbon carbon is saturation. That means this is what? Any 3 methyl butane. Which group is present in position 2? Alcohol. That means 3 methyl butane 2OL, or simply we can say 3 methyl butanol. Clear समझते? Clear all of you? No one doubt about the right of the nomenclature of an organic compounds. आमे आगु जाई क्वेश्चंस करिवा. या पर बहुत सारा क्वेश्चंस हमें डिस्कशन करिवा. बुझेला तो? क्लियर समझते? ओके चलो नेक्स्ट. साइड चेन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. देखो इटी प्रीफिक्स रे साइड चेन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट रे कोन लागिची? मिथाइल लागिची. ताले तार प्रीफिक्स कोन होबो? मिथाइल. एटी लागिची कोन? CH3 CH2 or C2H5. That means this is what? Ethyl. Another is what? CS2 CH3. That means what? Propyl. बुझेला तो? Propyl, isopropyl, butyl, secondary butyl. बुझेला तो? These are the number of prefix which is used in a what? Side chain or substituent of a group. If in nomenclature, if the bond CS3 CS2 CS2 CS3 CS3 sorry CS2 CS3, in this case total number of carbon, this is the parent chain of the carbon, total number of carbon atoms is what? 5. Yes or no? That means the word root, which kind of word root you use? Word root is what? Pent. This is what? Pent. That means this is the normal elongation of the parent chain carbon atom. The normal elongation of the parent chain carbon atom, that means this is called what? N-pentane. This is called what? N-pentane. Clear? In this case CS3 CH CS3 CS2 CS2 CS3. In this case this carbon atoms is attached with the what? Same number of 2 alkyl group. When same number of 2 alkyl group is attached to the same carbon atom, that means this is called what? Iso. This is called what? Iso. If we use the iso, that means we have to calculate how much number of carbon atoms is attached to the parent chain carbon atom. That means total 5 number of carbon atom. So we have to write what? This is called what? How much number of carbon? 5 number of carbon. Pent. All are the bond between carbon and hydrogen is what? Single bond. That means we have to write what? Any. Clear? This is called isopentane. Another is what? When same number of 4 alkyl group is attached to the same carbon atom, जदि 4टा सेम नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप गोटे कार्बन एटम को अटैच होबो ताले ताकू कोन कहै जिवो ना नियो कहै जिवो. कोन कहै जिवो? नियो. सो हाउ मच नंबर ऑफ टोटल कार्बन एटम? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 5. दैट मीन दिस इज कॉल्ड व्हाट? नियो. एंड ऑल आर द बॉन्ड बिटवीन व्हाट? कार्बन एंड हाइड्रोजन इज व्हाट? सिंगल बॉन्ड. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट? नियोपेंटेन. क्लियर? नॉर्मल लोंगेशन ऑफ द कार्बन एटम हेले ताकू कहबा n. We using n-pentane, n-butane, n-propane. Clear? But in case of when same number of 2 alkyl group is attached to the carbon atom, then this is called what? Which group? Iso group. Which group? Iso group. And when same number of 4 alkyl group is attached to the carbon atom, then this is called what? Neo. Clear समझते? No one doubt? No one doubt? Okay. So clear समझते? Side chain substituent कौन यूज होची? Prefix कौन यूज होची? Clear? चलो. Next we will discuss what? Priority order. What? Priority order. Priority order. Priority order of the what? Different kind of functional groups. Different kind of what? Functional groups. बुझिगला? एडी कोन अछि फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर. सबटू प्रायोरिटी ऑर्डर काहा को नै जिवो ना? कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एस्टर, then amide, then nitrile, then aldehyde, then ketone, then alcohol, then amine. These are the different kinds of what? Priority order of the what? Functional group. This is the increasing order of the what? Increasing order of the what? Priority order of carboxylic group. In this case, the carboxylic group is present. That means the suffix is what? Oic acid, and the prefix is called what? Carboxy. If the ester is present, then the suffix is called what? OATE. Another is what? Prefix is present. That means this is called what? Alkoxycarbonyl. This is called what? Alkoxycarbonyl.
If nitrile is present, then this is called what? If nitrile is present, then the suffix is name is what? Nitrile, and the prefix is called what? Cyano. Clear? But amide is present, then suffix is amide, then the prefix is what? Amido. In case of aldehyde is present, then the suffix is what? Al, and the prefix is what? Formyl. In case of ketone is present, that means the suffix is what? One, and the prefix is what? Oxo. Clear samaste? These are the similar, all the given name of the what? Different functional groups with suffix and prefix. Clear? समस्ते nomenclature करिया बिफोर आमको समस्ते जानिया पड़िबो word root समस्ते क्लियर आउ जानिबा कोन दरकार ना suffix कोन दिया हिची तार prefix कोन दिया हिची कोन functional group present अछि से हिसाब रे हमें nomenclature of an organic compounds करिबा बुझियला तो एठी दिया हिची given IPSC name of the compound दिया हिची तांकर nomenclature हम केमती करिबा how can you write the nomenclature of the IPSC given compound किए कहबो you can say what are the name of the IPSC of the given compounds केमती जानिबा हम ताको फर्स्ट कंपाउंड दिया हिची टोटल केतरा कंपाउंड दिया हिची 6टा कंपाउंड दिया हिची 6टा कंपाउंड रो नोमेनक्लेचर केमती करबा हम के कहबो फर्स्ट एटा को या नेमिंग कोन होबो टोटल नंबर एटा दिस इज द वर्ड बेंजीन रिंग रे केतरा कार्बन को ग्रुप अटैच हिची this is what CS2, this is CS2, this is what CS3, that means this is what propyl group. Yes or no? Benzene सहित propyl attach है तार naming कौन होबो propyl benzene. What is the name of the compound? propyl benzene. बुझियला एडी को ग्रुप प्रेजेंट है नाइट्राइल ग्रुप को ग्रुप नाइट्राइल ग्रुप ताले या नेम कौन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड को पडु प्रायोरिटी ऑर्डर को पडु काउंट होबो एबडु काउंट होबो ताले या नेम काहे कि नाइट्रेट ग्रुप प्रेजेंट अछि या नेम कोन होबो 1 2 3 4 5 बुझियला तो ताले पोजीशन 3 रे एटी किछि नै माने को ग्रुप लागि छि मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप ताले व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड 3 मिथाइल हाउ मच नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 कार्बन एटम pentane all are the single bond that means what pentane what nitrite pentane nitrite clear samaste in this case the nitrite group is present that means they are having more priority order that's we have to naming from what this side that means this is position 1 then 2 then 3 then 4 then 5 in position 3 which group is attached one another is what alkyl group is attached एडी कोन अछि गुड alkyl group present अछि ताले ता नेमिंग टाइम कोन करिबा ना राइट साइड रो करिबा ताले 1 2 3 पोजीशन 3 रे को ग्रुप अछि मिथाइल ग्रुप ताले या नेम कोन होबो 3 मिथाइल टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम वर्ड रूट केते 5 ऑल आर द सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम दैट मीन दिस इज व्हाट ANE saturation this is the saturated carbon atom that means what ANE which group is present nitrite group is present that means 3 methyl nitrite बुझियला समस्तन को 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्रेट क्लियर समझते क्लियर जो मैंने भी लाइव अच्छो सांग मान को शेयर करो एबे रेगुलर क्लासेस रहिबो नॉट ओनली ऑर्गेनिक क्लासेस फिजिक्स क्लासेस बायोलॉजी क्लासेस बहुत पीसीएम पई एंड सीबीजेड पई आउ आर्ट्स पिला मान कर भी रेगुलर चलची तुमर क्लासेस हला समस्त रेगुलर एबे क्लासेस कंटिन्यू करो ओके तापरे कौन हम नेक्स्ट नोमेनक्लेचर कौन हम किए कह हाँ आउरी गोटे गुड इनफॉरमेशन समस्ते जानिक रख बर्तन OAVS रो पेड बैच क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाइए जो मैंने भी जॉइन करने चाहूँ ए कॉन्टैक्ट नंबर गिवन दिखाई कॉन्टैक्ट नंबर समस्ते कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करो OAVS रो पेड बैच रो केमती कौन प्राइसेस समस्ते से इनफॉरमेशन मिल जाए ओके तो आम नेक्स्ट कंपाउंड यार नोमेनक्लेचर केमती करवा देख जदि आम नेमिंग करवा पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 एटी कौन होची ना पोजीशन 2 रे गोटे ग्रुप लगी जदि मु पटू नेमिंग करी जदि मु नेमिंग कौन करी ना पटू करी ताले कौन 1 2 3 4 5 6 7 एटी पोजीशन 2 रे लगुची देख एटी ग्रुप कौन होची ना पोजीशन 2 रे लगुची एडी ग्रुप कौन होची ना पोजीशन 3 रे लगुची एठी हमको देखिया पड़िबो व्हिच ग्रुप को ग्रुपटा कार्बन सहित क्लोजर अछि पेरेंट चेन ऑफ द कार्बन एटम सहित को कार्बन को से क्लोजर अछि बुझियला
ये हम देखिबार अछि कोन ए ग्रुपटा फास्ट कार्बन रो सेकंड पोजीशन रे आछी बट जदि हम एई पटु काउंट करिबा ताले एटा कोन आछी ए कार्बनटा को पोजीशन रे आछी थर्ड पोजीशन रे आछी एपटु एटा कोन सेकंड पोजीशन रे आछी ताले हम नेमिंग कोड करिबा ना लेफ्ट साइड रो नेमिंग करिबा देखिबा को पड़िबो जे ना नोमेनक्लेचर रे ग्रुप को कार्बन सहित नियरेस्ट अच्छी ताले ए कार्बन सहित नियरेस्ट अच्छी ताले नेमिंग कौन करिबा लेफ्ट साइड रु ताले कौन लिखिबा पोजीशन 2 रे गोटे ग्रुप लागिछि कोन मिथाइल ग्रुप पोजीशन 3 रे लिखिछि कोन मिथाइल ग्रुप एटा को को नोटेशन कहंती दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन बॉन्ड लाइन नोटेशन बॉन्ड लाइन नोटेशन रे भी तुम एग्जाम रे क्वेश्चंस पकई पारे नले कंडेंस्ड फॉर्म रे भी पकई पारे कंडेंस्ड फॉर्म रे भी एग्जाम रे पकई पारे बुझिला तो मु डिफाइन करी कंडेंस्ड फॉर्म रे केमती क्वेश्चंस आसे बॉन्ड लाइन रे भी केमती क्वेश्चन आसे बुझिला तो एबे देखो ए क्वेश्चन नेमिंग कोन होबो ना ई पडु हम नोमेनक्लेचर करबा ताले एटे कोन पोजीशन 2 रे गोटे मिथाइल ग्रुप पोजीशन एटे कोन होची 2 3 4 5 पोजीशन 2 रे गोटे पोजीशन 5 रे गोटे ताले नेमिंग कोन होबो 2 5 केतरा मिथाइल लागिछि दुईटा मिथाइल तापने कोन होबो डाई मिथाइल 2 5 डाई मिथाइल टोटल नंबर ऑफ कार्बन केते total number of carbon is what 7 ताले 2 5 dimethyl heptane word root is what heptane all are the single bond सेति में लागिबो कोन एनी बुझेला सफिक्स कोन लागिबो एनी बुझेला ताले नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज what 2 5 dimethyl heptane बुझेला समस्त को क्लियर क्लियर ओके नेक्स्ट इज what दिस कंपाउंड ओके जदि मु नेमिंग करी लेफ्ट साइड रू 1 2 3 4 5 6 7 बुझेला जदि मु नेमिंग करी राइट साइड रू ताले कंपाउंड को पड़े को ब्रोमीन को पोजीशन रे आसीबो 1 2 3 4 5 6 7 देखो एटी गोटे डिफरेंशिएट देखो एटी कोन होची ना फास्ट जो कंपाउंड अछि फास्ट एटी देखो जदि मु लेफ्ट साइड रू कोन करछि पोजीशन जदि नेमिंग करूछि ताले पोजीशन 2 रे क्लोरीन आसुछि ए सॉरी पोजीशन 3 रे क्लोरीन आसुछि पोजीशन 3 रे ब्रोमीन भी आसुछि जदि मु राइट साइड रू करबी ताले पोजीशन 5 रे कोन आसुछि ब्रोमीन आसुछि पोजीशन 3 रे क्लोरीन आसुछि बट एठी गोटे प्रॉब्लम कोन दिया हिची ना क्लोरीन भी अछि ब्रोमीन भी अछि एठी हमकु चेक करबा को पड़िबो कोन ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर कोन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर हिसाब रे एठी हमें कोन करबा ना नोमेनक्लेचर करबा एठी देखिया पड़िबो कोन अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे आगो के आसीबो ब्रोमीन आसीबो बी अल्फाबेटिकल देन इज व्हाट सी दैट मींस वी हैव टू टेक फर्स्ट ब्रोमीन देन इज व्हाट क्लोरीन दैट मींस 1 2 3 पोजीशन 3 रे को ग्रुप लागी ब्रोमीन लागी क्लोरीन लागी ता हम कोन लिखिबा 2 ब्रोमो नेक्स्ट इज व्हाट पोजीशन 2 रे सॉरी 3 ब्रोमो एंड दिस व्हाट 3 ब्रोमो 3 क्लोरो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज व्हाट 7 3 ब्रोमो 3 क्लोरो word root is what 7 carbon atom that means what hept all are the single bonded that's what any heptane this is called what 3 bromo 3 chloro heptane बुझेला समस्त को क्लियर ना नहीं ओके वेरी गुड नेक्स्ट इज what नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड्स कोन अछि नेक्स्ट अछि कोन ना एठी दिया हिची एटा को फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट अछि के कहबो व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट टू दिस कार्बन एटम कोन अछि एठी ना एल्डिहाइड कोन अछि एल्डिहाइड बुझियला एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अछि एठी गुटे कोन फंक्शनल ग्रुप अछि क्लोरीन हालोजन कंपाउंड ताले नेमिंग कोन होबो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर एल्डिहाइड पूरा प्रायोरिटी कोन मोर एज कंपेयर टू क्लोरीन दैट मींस नेमिंग हम कोन करिया पड़िबो एल्डिहाइड टू कार्बन जो कार्बन सहित अटैच अछि ताले 1 2 3 बुझियला ताले पोजीशन 3 रे क्लोरीन ग्रुप अटैच होईची पोजीशन 1 रे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होईची बुझियला तो ताले ता नेमिंग को हमें कोन लिखिबा के कहबो ना 3 क्लोरो केतरा कार्बन टोटल 3 कार्बन प्रोपेन 1 Al or simply we can write what or we can write 3 chloro प्रोपानल 3 क्लोरो प्रोपानल बुझेला समस्त को क्लियर तो ओके नेक्स्ट कंपाउंड के कहबो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड देखो
ए कंपाउंड को आम केमती लिखा ये क्लोरीन टाक कंडेन्स्ड फॉर्म रे रखाई आम केमती लिखा ना CH फास्ट कार्बन से केतरा क्लोरीन लगी दुईटा क्लोरीन नेक्स्ट इज व्हाट CH2 देन इज व्हाट OH बुझीगला तो ताले एठी देखो फास्ट कौन होइछि ना फास्ट एठी कौन होइछि क्लोरीन दुईटा क्लोरीन अटैच होइछि एठी कौन होइछि अल्कोहल अछि एठी अल्कोहल होइछि बुझिए तो किंतु प्रायोरिटी ऑर्डर हिसाब रे आगो हालोजेन आसीबो क्लोरीन आसीबो ना अल्कोहल आसीबो काहा को हमें फास्ट टेकिंग करिवा काहा को टेकिंग करिवा के कहइबो के कहइबो यस यस ताले नेमिंग कौन होबो ना पोजीशन 2 रे केतरा क्लोरीन लगी दुईटा क्लोरीन according to the priority order word alcohol priority is more as compared to chlorine that means naming start from this side 1 2 position 2 रे केतरा क्लोरीन लगी दुईटा क्लोरीन that means 2 2 केतरा क्लोरीन दुईटा क्लोरीन पई कोन लागिवो डाई क्लोरो position 1 रे कोन लगी alcohol this is called what this is called what we can write what 2 2 dichloro ethanol or simply or we can write what ethane 1 OL भी लिखि परिबा बुझेला 2 2 dichloro ethane 1 OL or we can write 2 2 dichloro ethanol बुझेला तो समस्त को क्लियर समस्ते कार कोटी डाउट अच्छी समस्ते क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट देखो एटा किए कहबो एटी पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 एटी देखिबार अछि कोन ना लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम कोठी अछि लॉन्गेस्ट चेन को कार्बनटा अछि जदि मु एपटे नेबी एटा 6 7 हबो जदि एपटे स्ट्रेट नेबी एटा भी 6 7 हबो ताले हमकु नेमिंग मु जदि एपटे टोटल टाकू नेम करछि ताले एटा लॉन्गेस्ट चेन हबो आइदर मु कोन करबी ना नेमिंग रे आइदर मु जदि एपटे नेमिंग करबी ताले एटा भी गुटे लॉन्गेस्ट चेन हबो बुझियला तो किंतु हमें नोमेनक्लेचर रे यू टेक एनी साइड बट you have to choose which one is the longest chain of the carbon atom longest chain of carbon atom एटी किए अछि ताले एंड को ग्रुप टा कार्बन सहित क्लोजर हे कि अछि ताले this is the group which is at closer to this carbon atom ताले नेमिंग कोन करी मु राइट साइड रे 1 2 3 4 5 6 7 बुझियला तो ताले पोजीशन 3 रे को ग्रुप लागी एटी कोन लागबो एटी कोन हो CH2 CH3 पोजीशन 2 रे को ग्रुप लगी इथाइल ग्रुप हाँ ना नहीं ताले यार एडी कौन हम CH3 एडी कौन हम CH3 एडी कौन हम CH2 एडी कौन हम CH एडी कौन हम CH एडी कौन हम C only C in this case what CH2 in this case what CH2 in this case what CH3 so what is the name of this compound के कहबो what is the name of this compound के कहबो यस यस कौन हम या नेमिंग ताले या नेमिंग टा हम केमती जानिबा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड या नेमिंग होबो कोन पोजीशन 3 रे इथाइल ग्रुप लागिची ताले मु कोन लिखिबी 3 इथाइल पोजीशन 4 रे केतरा मिथाइल ग्रुप लागिची दुईटा मिथाइल ग्रुप 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल दुईटा मिथाइल ग्रुप लगी से डाई मिथाइल टोटल नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेशन केतरा अछि 3 4 5 6 7 8 6 7 टोटल केतरा अछि 7 कार्बन एटम्स ताले 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल इज व्हाट हेप्टेन बुझेला समस्त को कौन हम एटा नेमिंग करबा कोठू ना राइट साइड रो नेमिंग करबा यानी पोजीशन 3 रे कौन अच्छी इथाइल ग्रुप ताले मु कौन लिखली 3 इथाइल पोजीशन 4 रे दुईटा मिथाइल ग्रुप अच्छी ताले कौन लिखली 4 केतरा मिथाइल डाई मिथाइल टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज व्हाट 7 दैट्स व्हाई द वर्ड रूट इज व्हाट हेप्ट
and bond between carbon and hydrogen all are the single bond. That's why suffix is what? Any. That means 3 ethyl 4,4 dimethyl heptane. Clear समझते? Clear समझते? चलो next कौन हो किए कहबो? What is the name of this compound? किए कहबो? किए कहबो? What is the name of this compound? Hmm. yes ताले एटी कौन होबो ना एटी डबल बॉन्ड अछि एटी कौन अछि ब्रोमीन अछि एटी कौन अछि क्लोरीन अछि देखो तीनटा फंक्शनल ग्रुप लागि छि एटी ब्रोमीन हालोजन ग्रुप एटी भी गोटे हालोजन ग्रुप एटी ब्रोमीन एटी क्लोरीन बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर हिसाब रे हमें काहा को नबा ना ब्रोमीन को नबा एटी किंतु डबल बॉन्ड अछि डबल बॉन्ड इज द मोर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू व्हाट हालोजन ग्रुप दैट मींस नेमिंग टा को पटू स्टार्ट हबो नेमिंग स्टार्ट हबो कोन ना 1 2 3 बुझीला ताले पोजीशन 1 2 3 अल्फाबेटिकल ऑर्डर हिसाब रे आगो कोन नबा ब्रोमीन तापर कोन नबा क्लोरीन ताले ये नेमिंग कोन हबो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो पोजीशन 1 रे कोन लागि छि क्लोरीन 1 क्लोरो एटा की ग्रुप लाइक एटा इट इज अ व्हिच ग्रुप साइक्लिक ग्रुप बुझेला तो साइक्लिक ग्रुप रे को बॉन्ड प्रेजेंट अछि डबल बॉन्ड प्रेजेंट अछि एडी बॉन्डटा को बॉन्ड अछि डबल बॉन्ड ताले नेमिंग कोन होबो ना 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सिन बुझेला तो और सिंपली हमें कोन लिखि परिबा ना 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो पोजीशन 1 रे लागि छि साइक्लो हेक्स 1 इएनी बुझिएला समझते आमे लिखि परिबा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन और कोन लिखि परिबा ना 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इएनी क्लियर समझते ओके नेक्स्ट कंपाउंड नेक्स्ट कोन हो कि कहू व्हाट इज द नेम ऑफ दिस नेक्स्ट कंपाउंड How can say what is the name of this next compound? के कहबो के कहबो नेमिंग कोन होबो एटी देखो एटी भी सेम केस एटी डबल बॉन्ड अछि एटी ब्रोमीन लागि छि बुझेला तो एटी लॉन्गेस्ट चेन हमकु चेक करिया पड़िबो लॉन्गेस्ट चेन चेक करिबा लॉन्गेस्ट चेक कले को पडू नेमिंग करिबा एटी डबल बॉन्ड पडू नियरेस्ट अछि ताले नेमिंग कोन होबो 1 2 3 4 बुझेला तो ताले पोजीशन 2 रे कोन अछि डबल बॉन्ड स्टार्ट होछि पोजीशन 4 रे कोन लागि छि ब्रोमीन आमे सिंपली ताकू स्ट्रक्चर टाकू ड्रा करिबा कोन CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C CH Br CH3 ये अछि ना कंपाउंड ये अछि तो बुझिएला तो ताले नेमिंग कोन हो देखो डबल बॉन्ड को कार्बन सहित क्लोजर अछि लेफ्ट साइड रू ना राइट साइड रू जदि राइट साइड रू आसीबी ताले पोजीशन 3 रे क्लोजर हबो जदि लेफ्ट साइड रू आसीबी ताले पोजीशन 2 रे कार्बन डबल बॉन्ड अटैच अछि ताले नेमिंग कोन करिबी मु ताले लेफ्ट साइड रू करिबी काइना प्रायोरिटी डबल बॉन्ड रो प्रायोरिटी मोर एज कंपेयर टू कोन दिस हालोजन ग्रुप बुझिएला ताले एडी कोन हबो नेमिंग स्टार्ट हबो ताले या नेमिंग कोन हबो ना 1 2 3 4 5 ताले पोजीशन 3 रे कौन ग्रुप लगी मिथाइल ग्रुप तापर कौन लगी ब्रोमीन हाँ ना नहीं कौन हम या नेमिंग कौन हम कह कौन हम आग अल्फाबेटिकल ऑर्डर आम मिथाइल नवा ना ब्रोमीन नवा यस कौन नवा ब्रोमीन ताले या नेमिंग कौन हम 3 ब्रोमो नेक्स्ट इज व्हाट सॉरी 4 ब्रोमो पोजीशन 4 ब्रोमो 3 मिथाइल total number of carbon is how much 5 carbon yes or no total number of carbon is what 5 carbon that means pent
In position 2 double bond is start, that means pent 2 ene. Bujhiyala. What is the name of this compound? 4 bromo 3 methyl. Total number of carbon, the word root is what? 5. That means word root is what? Total number of carbon is 5. That means what? Pent. In position 2 the double bond is started. That means what? 2, position 2. The suffix is what? ene. That means 4 bromo 3 methyl pent 2 ene. Clear? Clear समझते naming of this compound? Clear? Clear? Okay, chalo next. Next is what? Fission of covalent bond. First we have to know what in by fission. Fission of covalent bond. Fission, in this case fission means what? Breaking of bond. Fission means what? Breaking of bond. ताको आमे कौन कहि परिबा? फ्यूजन को आउ कौन कहि परिबा ना क्लीवेज. कौन कहि परिबा? क्लीवेज माने भी ब्रेकिंग. बुझी हला? एडी कौन कहिछि? फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इन बाय कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड due to the mutual sharing of electron. Consider A having 1 electrons, B having 1 electrons. Both are share equal electrons mutually. That means they form what? A bond B. That means this A bond B, this bond is called what? Covalent bond. And covalent bond, it is a what? Strong bond. Which bond? Strong bond. It is a what? Strong bond. Bujhiyala? Strong bond. And in this case covalent bond, that means the fission, the breaking of bond, or cleavage takes place in what? 2 ways. One is what? Homolytic fission, or this is called homolysis. Another is called heterolytic fission. This is called what? Heterolysis. Clear? So we have to know what in by homolytic fission, what in by heterolytic fission. Homolytic fission means what? Consider X, the bond between X and Y. Bond between what? X and Y. If this bond, the sharing of the 2 electrons, then it forms a what? Single bond. This is what? X bond Y. That means if X shared 1 electrons, Y shared 1 electrons, then it forms what? Now X bond Y. If X shared 2 number of electrons, Y shared 2 number of electrons, then it forms what? X double bond Y. In case of X shared 3 number of electrons, Y shared 3 number of electrons, then it forms what? X triple bond Y. That means this is what? This is forms of what? Alkane. Forms of what? Alkane. This is the form of what? Alkene. This is the form of what? Alkyne. The general formula of alkane is what? Cn H2n plus 2. The general formula of alkene is what? Cn H2n. The general formula of alkyne is what? Cn H2n minus 2. Clear? एटी कौन कही एटी हमको जानवर अच्छी कौन ना फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. आग समस्त जानीगल कौन कोवैलेंट बॉन्ड. एटी फिजन देखिबा, फिजन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बा क्लीवेज देखिबा. फास्ट हमें देखिबा कौन ना होमोलेटिक क्लीवेज. कौन देखिबा? होमोलेटिक क्लीवेज. व्हाट इन बाय होमोलेटिक क्लीवेज? हाउ कैन से व्हाट इन बाय होमोलेटिक क्लीवेज? व्हाट इन बाय होमोलेटिक क्लीवेज? जदी एटी मु नेली कौन एक्स आउ वाई भितरे बॉन्ड नेली. जदि से क्लीवेज दिस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज मीन्स व्हाट? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. जदि बॉन्ड टा ब्रेक होबो इक्वली one electron shifted towards the x and another electron shifted towards the what? Y. That means it forms what? X free radical plus what? Y free radical. That means the electron distributed between x and y is what? Equally. If the electron distributed between what? X and y equally, that means this is called what? Homolysis. This is called what? Homolysis. And such type of cleavage or such type of fission is called what? Homolytic fission. Is called what? Homolytic fission. Or simply we can say this is what? Homolysis. Is called what? Homolysis. Clear? Clear समझते? Next is what? Heterolytic fission. What in by? Heterolytic fission. Heterolytic fission हम केमती जानिबो? व्हाट इन बाय हेटेरोलाइटिक फिजन? होमोलिटिक जदि जानी गलो, हेटेरोलाइटिक भी ऑटोमेटिकली इजी.
होमो माने इक्वाल जदि डिस्ट्रीब्यूशन होची हेटेरोलिटिक रे कोन हो अनइक्वाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सिमिलर कथा ताले एटी कोन नेबी मु नेबी कोन कंसीडर x बॉन्ड y बुझियला जदि मु इलेक्ट्रॉन टा कंप्लीटली शिफ्ट करबी टुवर्ड्स द y दैट मीन्स दिस x shows what positive and the y shows what lone pair of electron with charge what negative बुझियला समस्त को क्लियर समस्ते when the electron is completely transferred from x to y that means this x is shows what which charge cation which charge cation and this is what anion बुझियला and this cleavage is called what heterolytic cleavage or heterolytic fission and the overall is called what this is called heterolysis clear समझते क्लियर फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड केमिति होची होमोलिटिक फ्यूजन कौन होमोलिसिस कौन हेटेरोलिटिक फ्यूजन कौन हेटेरोलिसिस कौन क्लियर समझते नेक्स्ट विल डिस्कस होमोलिटिक फ्यूजन देखो एडी होमोलिटिक फ्यूजन रे दिया हेची होमोलिटिक फ्यूजन रे कोन होची ना इक्वाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा हेची x free radical and this is y free radical this is called homolytic fission or homolysis हाँ homolytic fission by conditions requirement होची which conditions homolytic fission is required the conditions in which cases na non-polar cases non-polar means what they are having no opposite charges non-polar means what in by non-polar means if the bond forms between any compounds they are having no opposite charge they are having no opposite charge or no opposite ions that means this is called what non-polar if they are having opposite charge that means this is called what polar this is called what polar in this case homolytic fission the bond forms between the two atoms must be what non-polar and there should be different electronegativity between the what bonded atoms there is no electronegativity bonded between the what different atoms जदि एडी different atoms x y z a b anything you take anything जदि सेठी दिया हेतिबो तांको भितर जदि क्लीवेज होतुबो होमोलिटिक क्लीवेज बा होमोलिसिस होतुबो ताले तांकर को केसेस रे होतुबो से जो कंपाउंड नि हेतिबो से कंपाउंड दुटा कोन हेतिबा दरकार ना नॉन पोलर हेतिबा दरकार आ तांको भितर कोन हेतिबो देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थिबो बुझियला जदि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थिबो ताले सेटा कोन हबो पोलर हबो जदि नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थिबो ताले सेटा कोन हबो नॉन पोलर हबो बुझियला अनदर इज व्हाट homolytic cleavage the condition is requirement is what in presence of heat condition रे heat देला हबो आ कोन ना इलेक्ट्रिसिटी देला हबो आ कोन तो पेरोक्साइड देला हबो आ कोन रेडिकल्स पेरोक्साइड रे कोन देई परिबा हमें H2O2 देई परिबा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिथाइल पेरोक्साइड देई परिबा R2O2 भी देई परिबा अल्किल पेरोक्साइड बुझियला तो these are the different kind of peroxides so we can use the different kinds of what different kind of favors or formations using the what fission of the what homolytic fission or heterolytic fission the condition is what heat electricity peroxide and radicals clear समझते clear चलो next is what heterolytic fission already discuss हमें previously कर चर्चे कौन ना unequal share of the electrons they forms the what different ions तार conditions कौन requirement ना तांको भितरे polar हेतिबा दरकार already मु कहितली कौन हेतिबा दरकार polar हेतिबा दरकार आउ कौन हेतिबा दरकार ना तांको भितरे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थिबो कौन थिबो ना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थिबो बुझियला देले जाकी से क्लीवेज टा कोन हबो ना हेटेरोलिटिक क्लीवेज कोन हबो हेटेरोलिटिक क्लीवेज बा ताको हम कोन कहि परिबा ना हेटेरोलिसिस बुझियला जदि नेगेटिवली चार्ज फॉर्मेशन होथिबो ताले ताको कोन कहजिबो ना कार्बो एनायंस कोन कहजिबो कार्बो एनायंस जदि पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होथिबो ताको कोन कहजिबो ना कार्बो कैटायंस कोन कहजिबो carbocations means the compounds which shows positive charge carboanion means the compound which shows what negative charge बुझियला समस्त को clear and conditions requirement कोन homolytic cleavage ପାଇଁ the conditions is what now the two bonded atoms must be have a large difference of what electronegativity the bond between the two atoms must be what polar कोन होबा दरकार कोन को होबा दरकार polar होबा दरकार and factors like को दरकार ना low temperature आ पोलार सॉल्वेंट रे हमें नहीं परिबा कोन ना वाटर नहीं परिबा एसीटोन नहीं परिबा आ कोन नहीं परिबा मिथानॉल नहीं परिबो आ कोन नहीं परिबा डीएमएसओ नहीं परिबा डीएमएसओ इज व्हाट डाइमिथाइल
डाइमिथाइल सल्फोक्साइड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड भी नहीं परिबा आ कोन नहीं परिबा so these are the different kind of what these are the different kind of solvents is used in the what homolytic fission or heterolytic fission sorry they use in what heterolytic fission clear समझते next we will discuss what na difference between carbocation and carboanion and carboanion what in by carbocation how can say what in by carbocation means what in by carbocation means the charge always be what positive and the carboanion means the charge always be what negative and according to the electron density of the carbocation this is what electron deficient this is called carbocation according to the electron density in case of carboanion it is what electron rich according to the what electron density in case of electron count carbocation what lost an electron in case of carboanion it what gain an electron and in case of reactivity carbocations it is what electrophilic and carboanions is what nucleophilic बुझिएला and according to the stability carbocation is what more stable why they are the more stable because more the alkyl group is attached to the carbocation stability will be more when more number of alkyl group attached to the carbocation then the stability will be more बुझिएला जदि 3 डिग्री कार्बोकेटायन हेतु ताले स्टेबिलिटी मोर होबो देन 2 डिग्री देन कोन होबो 1 डिग्री 3 डिग्री कोन कोनथि टर्शियरी 2 डिग्री कोन कोनथि प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी 2 डिग्री कोन कोनथि प्राइमरी बुझिएला तो जदि कार्बोकेटायन को मु एठी नबी कोन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप केतरा लागि छि 3 डिग्री एटा 3 डिग्री ताले स्टेबिलिटी is what more than 2 degree 2 degree another is what बुझिएला तो this is what 1 degree ताले अकॉर्ड जदि मु स्टेबिलिटी चेक करी 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबिलिटी देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन देन इज 1 डिग्री क्लियर अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री क्लियर समझते चलो नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एवरीबॉडी शुड क्लियर द कांसेप्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ रिएक्शन ओके सो ये कौन अच्छी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आम आज जाना कौन केमिकल रिएक्शन टा केमिति प्रोसीड हुए केमिकल रिएक्शन में कौन कौन दरकार ना फास्ट होची सबस्ट्रेट कौन दरकार सबस्ट्रेट जोटा कि कौन आम नवा ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आम कौन दबा ना अटैकिंग रिएजेंट कौन अटैकिंग रिएजेंट देले से कौन फॉर्मेशन करिवो इंटरमीडिएट कौन फॉर्मेशन करिवो ना इंटरमीडिएट रू आमे कौन पाइबा ना प्रोडक्ट पाइबा कौन पाइबा प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द लिटिल बिट इज व्हाट बाय प्रोडक्ट इज फाउंड इन दिस केस दिस इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल द सबस्ट्रेट when attacking reagent is attacked to the what organic molecule then it forms the intermediate from this intermediate we get what by product and some of the byproduct is found this is called what organic reaction in organic reaction the organic molecules is refers to as the what substrate react with the what suitable reagent which leads to the formation of one or more intermediate and finally we get what product that means this is called what organic reactions clear समझते ऑर्गेनिक रिएक्शन आम टाइप ऑफ रिएक्शंस देखा ता बिफोर आम डिस्कस करवा कौन ना केमी सबस्ट्रेट रिएजेंट को अटैक करुँ देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करुँचे आम कंपाउंड नहीं कौन द कंपाउंड इज व्हाट इथिन दिस इज व्हाट इथिन इन इथिन on bromination that means what bromine molecule is present this bromine molecule is what reagent and the ethene is what substrate in this case CS2
double bond CH2, that means the bond cleavage between CH2 and CH2, this is what, this the bond cleavage is what, free radical, to form the what, free radical, that means CH2 free radical, single bond, another is what, CH2 free radical. In this case Br, this Br which is act as a what, nucleophile, which act as what, nucleophile. Nucleophile means what, electron what, attacking reagent. In this attacking reagent, this bromine, that means react with what, Br, bond Br, that means this 2 number of bromine is attacked to the what, free radical of the carbon atoms, then it forms a what, then it forms a what, CH3 sorry, CH2Br, CH2Br, another is what, CH2Br. That means what is the name of this compound, 1,2 dibromo what, ethane. बुझीगला ताले आमे कोन कले ना आगो पाइले कोन आल्किन रु पाइले कोन आल्केन, केमिति पाइले ना सबस्ट्रेट को रिएक्ट कले रिएजेंट सहित देले पाइले कोन प्रोडक्ट, आमे अनसैचुरेशन रु सैचुरेशन फॉर्मेशन कले केमिति ना विथ द ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, रिएजेंट इज व्हाट, ब्रोमिन मॉलिक्यूल. क्लियर समझते, क्लियर. सिमिलर एटी दिया हिची कोन सबस्ट्रेट दिया हिची बेंजीन सहित मिथाइल क्लोराइड को, बेंजीन सहित काहा को दिया हिची, मिथाइल क्लोराइड को. बेंजीन सहित मिथाइल क्लोराइड रे कोन अछि ना, बेंजीन सहित काहा को रिएक्ट करा हिची, मिथाइल क्लोराइड को. बेंजीन टा कोन एटी सबस्ट्रेट, मिथाइल क्लोराइड टा कोन रिएजेंट. बुझियला तो. इफ द बॉन्ड बिटवीन CH3 and Cl electron according to the negativity, chlorine is the more electronegative as compared to this alkyl group. That means the electron shifted towards the what, chlorine. That means chlorine shows what, negative, this CH3 shows what, positive, and this is called what, carbocation, this is called what, carboanion. बुझियला ताले कोन बटी in benzene ring every corner of an benzene ring, if there is carbon atom is present, that means there are also hydrogen also present, there is what, hydrogen also present. बुझियला. The hydrogen charge is what, electropositive, that means the electronegative element is what, chlorine, which is bond forms with what, hydrogen, then it byproduct from what, HCl, and the electropositive is what, CH3, which is attacked to the what, carbocation of what, benzene ring, then it forms what, product is what, the product name is what, toluene. ता कोन कोनती, toluene. जदि बेंजीन रिंग रे CH3 ग्रुप अटैच हुए ताले ताको कोन कोआ जाए, टॉलुइन को जाए, कौन को जाए, टॉलिन को जाए. जदि NH2 होता ताले ताको आजो कोन एनिलीन, जदि CHO ग्रुप लागि था ताको आजो कोन एल्डिहाइड. बुझियला तो. अल्कोहल हेतले फिनॉल. so the different product is formed depend on the what, attacking reagent with what, substrate. क्लियर समझते, क्लियर समझते. चलो नेक्स्ट विल डिस्कस nucleophiles and electrophiles. These are the most important. Nucleophiles and electrophiles. Nucleophiles and electrophiles. How can say what in by nucleophiles, what in by electrophiles? Nucleophile means what? What do you mean by nucleophiles? Nucleophile means nucleus loving species. Electrophile means what? Electron loving species. Electron रो charge कोन negative, जे negative charge को attack करिवो के पॉजिटिव, पॉजिटिव को अटैक करले से कोन हो, इलेक्ट्रोफाइल. जे पॉजिटिव को नेगेटिव अटैक करियो ताले से कोन, न्यूक्लियोफाइल. एडी न्यूक्लियोफाइल रो चार्ज कोन, न्यूक्लियोफाइल माने कोन, तार एडी कोन चार्ज नेगेटिव, तारे न्यूक्लियस रो सेंटर चार्ज रे कोन पॉजिटिव, ताले पॉजिटिव को जतलो अटैक करियो से कोन फॉर्मेशन करिवो, न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल रो चार्ज कोन पॉजिटिव. इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, से काहा को अटैक करिवो, इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप को अटैक करिवो. काहा को, इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप. इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को क्या अटैक करिवो, इलेक्ट्रोफाइल. बुझियला. ताले एठी हमें जानिबा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल केमिति फॉर्मेशन हले. क्लियर समझते. एठी कोन कहिछि ना, ए रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टिव साइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल. इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियोफाइल. दैट इज द न्यूक्लियो सीकिंग. ताको कोन कहंती ना, न्यूक्लियो सीकिंग भी कहै छै. एंड द रिएक्शन is then is called what, nucleophilic reaction. कौन कहती ना, nucleophilic reaction. बुझियला. Similarly in case of a reagent that takes away electron pair from the reactive side is called what, electrophile. The charge is what, electropositive.
बुझीगला and this is called what electron seeking, this is also called electron seeking and the reaction is called what electrophilic reaction बुझीगला क्लियर समझते इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स कार्बोकेटायंस कार्बोएनायंस बुझीगला दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एगुड़ा सब जानिया दरकार देले जाय कि रिएक्शन रे केमती रिएक्शन किए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करूची के न्यूक्लियोफाइल अटैक करूची से देले जाय कि तुम कॉन्सेप्चुअली रिएक्शन करि परिबो बुझीगला समझते चलो नेक्स्ट इज व्हाट एडिशन रिएक्शन फास्ट रिएक्शन हम कौन देखिबा एडिशन रिएक्शन माने कौन गोटे जनरल कॉन्सेप्चुअल थिंग्स एडिशन रिएक्शन गोटे रिएक्शन रे कौन होची एडिशन टा केते बेले होची ना इट इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस वेयर टू और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल जेतेबेले टू और मोर मॉलिक्यूल जेतेबेले कंबाइन हबो से कौन फॉर्मेशन करिवे लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करिवे ताले ताकू कौन कहा जिवो ना एडिशन रिएक्शन करा जिवो तो एडिशन रिएक्शन टा केते बेले पॉसिबल्स ना व्हेन इट शोज व्हाट alkenes or alkyl means that means it takes place in what double bond as well as what triple bond. Consider we take the example R single bond C single bond C single bond R single bond R single bond R बुझीगला आमे ताकू कौन करिबा ना हाइड्रोजनेशन कले कौन कले हाइड्रोजनेशन कले कहा प्रेजेंस रे ना Ni निकेल प्लैटिनम नले पैलाडियम भी नहीं परिबा बुझीगला ऑन हीटिंग this is what is the name of this compound किए कहबो what is the name of this compound yes कोन ना 2,3 डाई मिथाइल 2,3 डाई मिथाइल व्हाट केतरा कार्बन अछि 4टा कार्बन ताले ब्यूट वाइड रूट इज व्हाट ब्यूट 2 ene बुझेला 2 पोजिशन 2 रे एटा जदि मु लॉन्गेस्ट चेन नेबी ताले एटा गोटे ग्रुप हो जदि एई पटे एटा लॉन्गेस्ट चेन नेबी ताले एटा गोटे ग्रुप हो हो ना नहीं ताले एटी कोन हो पोजिशन 2 रे गोटे ग्रुप लागिछि अल्किल ग्रुप पोजिशन 3 रे गोटे अल्किल ग्रुप लागिछि ताले पोजिशन 2 रे डबल बॉन्ड स्टार्ट हेछि एपट जदि नेबी एटी पोजिशन 2 रे डबल बॉन्ड स्टार्ट हबो कंसीडर मु लेफ्ट साइड रो नंबरिंग करली ताले 1 2 एंड 3 इन पोजिशन 2 रे लागिछि गोटे अल्किल ग्रुप पोजिशन 3 रे गोटे अल्किल ग्रुप सेति पय लिखली कोन 2 3 केतरा मिथाइल लगी अल्किल ग्रुप दुईटा ताले 2,3 डाई मिथाइल हाउ मच नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम द वाइड रूट इज व्हाट ब्यूट इन पोजीशन 2 डबल बॉन्ड इज अटैच्ड दैट मींस व्हाट 2 ene क्लियर समझते ताले मु कोन कहली ना 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन ताकू काहा प्रेजेंस रे कहली ना निकेल पैलाडियम और प्लैटिनम देखि कोन कहली हिट कहली से रिएक्शन टा कोन कहली ना हाइड्रोजनेशन कहली इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ताले तो कंपाउंड कोन फॉर्मेशन होबो R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H होना नहीं ताले एटी कोन थिला अनसैचुरेशन थिला को फॉर्म रे थिला अनसैचुरेटेड रे हम कोन पाइले सैचुरेटेड कोन पाइले सैचुरेटेड बुझियला तो काहा प्रेजेंस रे हाइड्रोजन को ऐड करले ताले एटी हाइड्रोजन ऐड हला को पोजीशन को कार्बन पोजीशन 2 और पोजीशन 3 को ताले अनसैचुरेशन रो कोन फॉर्मेशन हला सैचुरेशन हला बुझियला तो से रिएक्शन रो की रिएक्शन को आजिवो एडिशन रिएक्शन कोन को आजिवो एडिशन रिएक्शन बुझियला एडिशन रिएक्शन को केस रे होची ना अल्कीन्स आउ अल्काइन्स क्लियर समझते क्लियर चलो नेक्स्ट इज व्हाट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन coming class we will discuss nucleophilic addition reaction and free radical addition reaction. There are different kind of reaction we will discuss in what next class. Okay, next class we will discuss, all of you must be present. Okay, आ जो मैंने एबे रेगुलर क्लासेस चली जो मैंने एबे ओएवीएस पई जॉइन होबा पई चाहूछ एथि कांटेक्ट नंबर दिया है पेड बैच रे रेगुलर कोर्स अछि समस्ते काइंडली जॉइन करो. ओके, थैंक यू.